back once again to your favorite channel, that is Lukmaan IAS, and we are going to proceed in our today's daily current affairs analysis, that is DCA session. Okay, so डेट बीइंग 21st of March 2023 और आज की जो ताजा खबर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइट खबर जो है दैट इज नेचर्स सरकाज़म विथ प्लास्टिक रॉक्स, व्हाट दे आर एक्चुअली. ओके, सो प्लास्टिक रॉक अपने आप में आप देखो कि कितना मतलब ये सरकाज़म है, कितना आयरॉनिक स्टेटमेंट है. प्लास्टिक भी और रॉक भी है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कम दैट बी पॉसिबल? ओके, सो इसकी पॉसिबिलिटीज जानने के लिए आइए हम देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स. ओके, सो फॉर द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे, ओके, दैट इज विथ रिगार्ड टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. आईसीसी ने एक बहुत ही जिस बोलते हैं ना शॉकिंग और सरप्राइजिंग एक्शन लेते हुए एक अरेस्ट वारंट इश्यू किया है. अब ये अरेस्ट वारंट किसके अगेंस्ट इश्यू हुआ है ये सुनकर हम सब जो है अचंभित हैं, सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं. ये अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ है किसी और के खिलाफ नहीं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट. नाउ वी फिगर अबाउट हाउ कम दैट पॉसिबल. It's just one of those impossible things that we are talking about, but yes, the International Criminal Court has converted the impossible into something that is very well quietly possible. Okay, so if we see the headline, if we see the name statement here, so ICC, it has issued the arrest warrant against whom? Vladimir Putin for war crimes in Ukraine. Dear ICC, International Criminal Court, if you can hear us somewhere, even if it is possible, I would ask you just one single question, that isn't it too late for you to take this action? Like, it has been more than 13 months since the Ukraine war has started, since the Russia-Ukraine war has started. It has last 1.5 years, or specifically last 1 year, the world has seen many of the incidences taking place inside the Eurasian territory, specifically Russia and Ukraine. Isn't it too much dishonest action? Isn't it too much of the biased action that you are taking up, Vladimir Putin? But you're not talking about Xi Jinping. What's happening inside the territory of Xinjiang? Why are you not talking about the atrocities the people faced inside the location of Balochistan? Why the Syrian government is not taken inside the box of the questions when it comes to the regime of Bashar al-Assad? What's happening there inside the territory of Syria? The whole world is the evidence. The whole world has witnessed it. Okay, so why not you're taking an action for the Nigerian people? Okay, so the International Criminal Court ICC has taken up this action against Vladimir Putin more than 13 months later since the war sparked out in the territory of Ukraine. Yes, Russia is a culprit. Yes, we are Indians, we do support Russians always. We have a very good, cordial, best type of relations with the state of Russia. No doubt in that. He is one of our best allies, best friends. But what's the problem here? Okay, that is something which is right is to be appreciated always, and something which is wrong is to be criticized always. And yes, we condemn, we criticize the Russian government's action on Ukraine. We, as the nation of India, the peaceful nation, okay, the peace-loving nation, the peace-loving people, peace-loving government as well, right? So we do always support no war theories, no war principles. And yes, we have also provided our heartiest gratitude and condolences to the people, those who have martyred their lives in the war of Ukraine, and the innocent citizens, those who have given up their lives in the war. But still today, okay, this is a question that has been raised by the International Criminal Court and the international media as well, that isn't it, you know, very much partial and biased. Okay, so एक सवालों के कटघरे तो बहुत हैं, लेकिन जवाब मिलना शायद नामुमकिन है. बिकॉज अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिनोसाइड, इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेती है, तो व्हाई जॉर्ज बुश वाज नॉट कॉल्ड फॉर
his government's action in the state of Iran, in the state of Iraq? Why they were not called for question when it was the high level of mass killings, genocide, and the bombardment in the state of Afghanistan? There are end number of questions. Okay, see, what is going on is nothing but just the conspiracy. Why? What we have seen that when the world failed to provide, to compel Russia to give up with the war, with its principles, with its weapons of sanctions, talking about the European nations of England, Germany, okay, and we're talking about the West nations, that is Canada, America, or you can call it the other nations, that is Australia as well. When they failed with their sanctions, with the weapon of their sanctions, to compel Russia to withdraw the war, now they have come up with the ICC, International Criminal Court. ओके, सो अगर हम बात करें आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, तो एक चीज जो आपके दिमाग में सबसे पहले फिट होनी चाहिए, दैट इज आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यूनाइटेड नेशंस से कोई भी लेना देना नहीं है. Okay, ICC and United Nations, they are two separate entities. They are not a single entity. Okay, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते that United Nations, okay, that ICC works under the purview or under the aegis of United Nations. No, absolutely not. Okay, so when we see, when we talk about the headquarters of the ICC, it is placed in Hague, where it is, Netherlands. Okay. Next, the court's founding treaty is known as Rome Statute. When it was signed in the year 1998. Okay. Then, the most important thing with regard to our prelims as well, that is, India is not a party to the Rome Statute along with the US and China. The three major powers of this globe are not the signatories to the International Criminal Court. That's another irony of geopolitics. Okay, India, we don't find ICC as a center of justice, but the very same thing, the very same principles, the very same set of thoughts are also followed by our beloved neighbor friend, the friendly neighborhood, China. And yes, the nation who has no exact set of principles in geopolitics, who always changes, okay, that is, their international relations theory, their international policies are never stable, never constant. That is the United States of America. They also do not find any cognizant level or any cognizant reasons to admit into the principles of the International Court of Justice. Okay, so they are not the party, they are not the signatory. So we are not the party to the Rome Statute, neither the United States nor the Communist state of China. Okay, so now when we talk about what is going on with the principles of ICC, so first, the crimes of genocide is characterized by the specific intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group by killing its members or by other means, causing serious bodily or mental harm to the members of the group. Genocide की बात कर रहा है आईसीसी मतलब इंटरनेशनल, जो हम बात कर रहे हैं क्रिकेट काउंसिल, वो नहीं होता है. हम आईसीसी की जब बात करते हैं तो दो चीजें हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी आईसीसी है, नो डाउट, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी आईसीसी ही है. ओके, तो जब हम बात करते हैं जिनोसाइड की, सो व्हाट वी हैव सीन कपल ऑफ इयर्स बैक, सम अराउंड 2 years back, दैट सडनली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका condemned its own actions that they performed inside the territory of Armenia in the year 1923. Armenian genocide was recognized and condemned by the United States of America itself, where they were the prime culprits.
and still ICC has nothing to say. चलो उस टाइम ICC एग्जिस्टेंस में भी नहीं था, समझ में आता है, बट इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी तो एग्जिस्टेंस में थी, उसके बावजूद भी अमेरिका के एडमिट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. ठीक, American action is on the one side, on the very parallel, on the very opposite direction when we move from west towards east and we come towards the continent of Asia. Then the Praveen Mishra government, okay, should have been come into the action, okay. Okay guys, so there was a glitch, sorry, okay. So coming to the point here, that is Praveen Mishra government, okay, what they did in the state of Balochistan, no one asked. ICC was mute at that time. शिनजियांग की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसके अलावा the Sri Lankan government was also not called. See, these are the incidences which we are sharing. Sri Lankan government was also not called when it comes to the civil war that took place there in the year 1985, when it was the mass scale killing or genocide of the Sri Lankan Tamils, because of which there was an organization also created known as LTTE or Litte, popularly known as Litte, that is Liberation of Tamil Tigers Elam. Okay, there was a racial war going on inside the state of Sri Lanka in the year 1985. That is the war going on between the Sinhalese people of Sri Lanka and the Sri Lankan Tamils. But even that time ICC didn't took any action. Now once again, yes, ICC tab bana nahi tha, okay, but civil war lasted quite long. Like civil war lasted for more than 25 years in the state of Sri Lanka. And in that meantime, ICC was formalized. It came into the physical existence with all of its statutes, right? But even then also, they never bothered to call on the Sri Lankan government. Okay, so every now and then what we are watching is the biasness and the partial behavior. They are showing the huge round of partiality with the governments. Okay, and what is going on with the Vladimir Putin? Okay, it is once again sort of partiality and the biasness. So further things. Secondly, the ICC can prosecute crimes against humanity which are serious violations committed as part of a large-scale attack against any civilian population. So dear ICC, let me inform you something. There is a group, there is a community, those who have migrated to India. They are basically from Myanmar, they entered India from the state of Bangladesh. We are providing them the refuge status and everything. We are providing them with all the basic civil amenities. Okay, but why aren't you asking the state of Myanmar why the people are leaving, why the people are not there, and why the genocide is taking place? ओके, सो इस पर भी बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है कि आपने देखो यहाँ पे लिख रखा है आईसीसी के स्टैट्यूट के अंदर, फर्स्टली यू आर टॉकिंग अबाउट द एथनिक, रेशियल और रिलीजियस किलिंग, एंड सेकेंडली यू आर टॉकिंग अबाउट द वायलेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी. बट यस, रोहिंग्यास, ओके, रोहिंग्यास के ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? म्यांमार और बांग्लादेश को आप कटघरे में क्यों नहीं बुलाते? This is a very huge question that we need to answer. Actually, ICC needs to answer.
right? So partiality, biasness, this is all what surrounds the geopolitics when it comes to the International Criminal Court. The Rome Statute is in question, and yes, and that's why the reasons are India, the United States of America and China, they haven't signed, that is we, America and China haven't signed the Rome Statute, and we are not the signatory, we are not the part. Okay, so thirdly, war crimes are grave breaches of Geneva Conventions in the context of armed conflict. So guys, एक homework भी रहेगा यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि आप लोग रोज क्लास तो कर रहे हैं, what I can see, what I can observe, but taking the things seriously. Okay, like couple of days back, I asked in one of the sessions to provide me the answer to comment that what you understand by the shell companies. No one bothered to answer. Yesterday also I gave a homework, that is, what is the difference between lava and magma? No one bothered to answer. And today also I am 100% sure I am giving another homework, but I am quite sure again no one will bother to answer. That is, what do you understand by the Geneva Convention on Human Rights, or Geneva Convention or on war against on the Convention against the wars and human killings, genocide and so on. Okay, so Geneva Convention क्या है, ये homework रहेगा, देखते हैं कौन करता है इसे, कौन नहीं करता है. Okay, so the fourth includes crime falling within ICC's jurisdiction. It is the crime of aggression, and it is the use of armed force by a state against the sovereignty, integrity or independence of another state. So dear ICC, if you are having such kind of wonderful principles, wonderful provisions, see the next point, it is the use of armed force, that is aggression की बात हो रही है, crime of aggression, that is justified as the use of armed force by state against the sovereignty, integrity or independence of another state, right? Are you not aware with what's going on in Israel and Palestine with the Gaza Strip issue? Are you not aware with the TPLF, Tigray People Liberation Front? Are you not aware with what's going on in the West Bank? Are you not aware with what's going on in Kenya, Sudan and South Sudan? Are you not aware what's going on inside the territory of Kuwait? So why aren't you calling these people as well? This is also a huge question. Okay, so see the last thing here. The definition of this crime was adopted by amending the Rome Statute at first review conference of the statute in Kampala, that is Uganda, in 2010. Amendment डाला गया कभी रोम स्टैच्यू के अंदर, in the first review conference FRC, where Uganda in the year 2010. ओके, कौन सी सिटी थी? सिटी का नाम था कंपाला, युगांडा के अंदर. काश आईसीसी आप हमारी बातें सुन पाते. Okay, so guys, this is the first headline for the day with regard to the International Criminal Court and why the Putin doesn't give a damn कि यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, करिए आप जो कर रहे हैं, that's not even my concern. Okay, now the next thing guys, the next headline for the day, one of the very interesting things that we are about to discuss today, that is the government selected 7 states. Yes, we're not talking about the 7 sisters of our northeast, but 7 other random states being Tamil Nadu, Sikkim, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to develop mega textile parks under PM Mitra. Okay, so guys, बहुत ही ज़्यादा important है states का नाम. PM मित्र करके स्कीम है, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे. ओके, वो टेंशन नहीं है. ओके, टेंशन क्या है? स्टेट्स का नाम जिन्हें हाल ही में पीएम मित्र स्कीम के अंदर इंडक्ट करके वहां पर टेक्सटाइल पार्क्स बनाया जा रहा है. सो व्हाट आर द नेम ऑफ द स्टेट्स? बफरिंग हो रही है बहुत. ओके गाइस, होल्ड ऑन प्लीज, जस्ट लेट मी चेक.
Guys, please hold on. We are checking it. Okay, what's the issue? Buffering क्यों हो रही है? Or okay guys, so sorry for the inconvenience. There was a bit of glitch, okay, in the network system, so that's why we have to halt for a couple of minutes. So coming back to the point, the 7 states, the name of the states are important, that is to be remembered, okay. So the name of the states: Tamil Nadu, Sikkim, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. ठीक है, तो देखो नाम याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, ओके, सिंपल सी कहानी है, याद रख सकते हैं इनको बहुत आराम से, ओके, दैट इज ओके। तमिलनाडु, सबसे पहले टेक्सटाइल की बात आती है तो वी हैव गॉट तमिलनाडु, ओके। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश भी टेक्सटाइल में सबसे आगे है। देन हम बात करते हैं सिल्क, तो हमें मिलता है सबसे पहले आसाम और सिक्किम से सबसे बेहतरीन, जिसे बोलते हैं ना मूगा सिल्क, ओके, फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम एंड सिक्किम वी डू गेट इट, ओके। सो सिक्किम भी यहां पे है। उसके अलावा द स्टेट्स विच आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट when it comes to the industrial development, without any questions, they are the states of Maharashtra and Gujarat, ओके। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, यूपी है, एमपी है, सिक्किम है, ओके, राइट। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज स्टेट्स एंड यस, वन मोर वी हैव गॉट, दैट इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका, okay, so these are the states: Gujarat, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Karnataka, those who are always the front runners, the front foot players in the field of industries and the textiles. Apart from that, we got Sikkim with us, okay, from where we get one of those wonderful or the finest quality of silk, okay. Then MP is there, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh is there, the states, those who are developing on a very fast rate when it comes to the industries. And then last but not the least, yes, another state which is now right now providing us very wonderful establishments of the industry of the textile, that is the state of Tamil Nadu, okay. So coming to the point, PM Mitra scheme, okay, so it is under the Ministry of Textiles, ओके। अब ऑब्वियसली पीएम मित्रा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की हम बात कर रहे हैं, तो फिर कौन से एक ये स्कीम के अंदर कौन सी जो है स्कीम होगी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी। सो द पीएम मित्रा पार्क्स इज एनविसेज्ड टू हेल्प इंडिया इन अचीविंग द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9, okay, that is build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation,
Okay, so guys, make the notes very well. That is PM Mitra. It is under the Ministry of Textiles. फर्स्ट थिंग, ओके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी नोटेड. उसके अलावा पीएम मित्रा स्कीम जो है वो किन लाइंस पर बनाई गई है? वो हमारे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9. Okay, that is what is the theme of the sustainable goal number 9 of the United Nations. यहाँ पे लिख रखा है build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster the innovation. Okay, build sustainable or reliable infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation. ठीक है, resilient infrastructure मतलब strong infrastructure. Okay, sustainable industrialization matlab an industrialization that is not going to trouble up the environment and ecology of the globe. And apart from that, foster innovation, that means innovation को promote किया जाए, innovation को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए. Okay, जिसके पीछे हमने और भी कुछ schemes launch की हैं इंडिया में, जिसे हम कहते हैं Startup India, Stand Up India, Make in India. So all of these schemes are on the lines of the goal number 9 of the United Nations Sustainable Development Goals. Okay, एंड गोल नंबर 9 नाम फिर से समझ लेते हैं. क्या लिखा है यहाँ पर देखो, बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन. दैट इज व्हाट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 9 इज. अंडर द एजेस ऑफ दिस गोल itself we have created up the scheme known as PM Mitra scheme, which is working under the Ministry of Textiles, right? Okay, so what is the objective? तो clear है, हमारा जो गोल है, उस गोल का जो थीम है उसी से हमारा ऑब्जेक्टिव निकला है. तो एकदम शॉर्ट में इसको आप देख सकते हैं, क्लियर कट. दैट इज क्रिएटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर which would attract cutting edge technology and boost FDI and local investment in the textile sectors. अब थोड़ा सा टेंशन आ जाएगा ना, ये कटिंग एज मतलब क्या? कि ये सर हमने तो कटिंग चाय सुनी है, एज हमने क्रिकेट में देखा है कि एज लग जाता है तो बैट्समैन आउट हो सकता है, कैच आउट हो सकता है. ठीक है, राइट. एज हमने किसी चीज का किनारा पढ़ा है. ठीक है, मोबाइल फोन्स भी आते थे एज के नाम से. ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब क्या? हाउ डू वी डिफाइन दी कटिंग एज टेक्नोलॉजी सिस्टम? ओके, तो सिंपल शब्दों में द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. Okay, the latest green technology is what we call the cutting edge technology. Okay, simple. Okay, so ये अब obviously जब गोल 9 के जब आप प्रिंसिपल को देखोगे, थीम को देखोगे, तो उसमें ये चीज क्लियर है. Okay, now what is here? The PM Mitra is inspired by the 5F vision of the Prime Minister. ओके, तो इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए थे, 5F. तो ये 5 विजन पॉइंट्स कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. ये भी रहेगा आपके लिए आज का ताजा होमवर्क. दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 5F. ओके, 5F विजन ऑफ द PM मित्रा. ओके, जो कि हमारे जो मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका ब्रेन चाइल्ड है. दैट इज 5F. ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द PM मित्रा स्कीम. कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर है. यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल नंबर 9. ओके, दैट इज रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन के तहत हमने PM मित्रा स्कीम बनाया है. 7 स्टेट्स में जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क्स लगाने की बात करी गई है. कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं? तो वो है हमारा state of Tamil Nadu and Karnataka from the south, Maharashtra from the Deccan, Gujarat from the west, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh from the center, and Sikkim from our northeast. Okay, so this was the PM Mitra headline, guys. Moving on to the next topic for the day, that is Jharkhand's Udhwa Bird Sanctuary in news with the ongoing speculation of its getting the prestigious Ramsar site status. Okay, so Ramsar Convention के तहत we designate areas as wetlands that are one of the important ecological terms.
ओके सो एक ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जोन भी होते हैं वेटलैंड्स, वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन जोन्स हैं ये दुनिया के, ओके जहां पर अच्छे खासे फ्लोरा एंड फौना और बहुत ही ज्यादा वंडरफुल स्पीसीज हमें अवेलेबल होते हैं ऑन टू द वेटलैंड्स। और रामसर कन्वेंशन के तहत, रामसर दैट इज द सिटी इन द स्टेट ऑफ ईरान, इन द कंट्री ऑफ ईरान, जहां पर एक कन्वेंशन हुआ था, ओके जिसके नाम पर, जिस सिटी के नाम पर एक कन्वेंशन साइन किया गया है। ओके सो रामसर कन्वेंशन which is talking about identification of the wetlands. Okay, wetlands they are the transition zone in the ecology. Okay, और इस transition zone में हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे खासे quantity और quality में unique flora and faunas हमें यहाँ available होते हैं, बहुत ही unique species available होते हैं। आप bird species की बात करें, आप जो है plant species की बात करें, या आप जो है animal species की बात करें, वहाँ मिल जाते हैं। Okay, so guys, what we can talk about here, that is with regard to the Udhwa bird sanctuary in Jharkhand. So it is situated where? It is situated in the Sahebganj district of the state of Jharkhand. Then it is the only notified bird sanctuary in the state. तो अगर क्वेश्चन आता है how many notified bird sanctuaries are there in the state of Jharkhand? Just one, named Udhwa. So it is named after Saint Uddhava of Mahabharata, okay, a friend of Lord Krishna. ठीक, सो महाभारत के टाइम पीरियड पे संत हुआ करते थे, संत उद्धव, ओके जिन्हें कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के जो हैं ये बहुत ही करीबी उनके मित्र, दोस्त, अलाई, फ्रेंड हुआ करते थे। ओके तो जैसे कि एक नाम आपने लॉर्ड कृष्णा के साथ हमेशा सुना होगा, सुदामा, तो उसी तरीके से एक नाम आपके सामने यहाँ पे और है, उद्धव। ओके सो इसका एक मैथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल यानी कि एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा it falls within the Gangetic plains of biogeographic zone. Then the sanctuary has two water bodies known as Patauran and Barhali, interconnected by a water channel. Then the sanctuary is connected to the Ganga river through a 25-kilometer long water channel known as Uddhava Nala, okay, at the Farakka. So फरक्का बैरेज हम सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे वाटर कनेक्टिविटी के लिए, तो उसी में से निकला है हमारा उद्धवा नाला। ओके राइट, देन द सैंक्चुरी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया एंड द बर्ड्स दोज हु आर अवेलेबल हियर, ओके सो ब्राह्मी काइट, फिशिंग ईगल, टर्न, hawk, vulture, house and palm swift, swallow, kingfisher and drongo, तो ये सारे birds हैं जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। Okay guys, so this is all about the उद्धवा bird wildlife bird sanctuary। कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड की इकलौती आइडेंटिफाइड बर्ड सेंचुरी है, उद्धवा संत के नाम पर, जिनका महाभारत में जो है मेंशन है। Okay, then apart from that it is connecting, okay, to the Ganga river with a 25-kilometer long barrage, with a long 25-kilometer long canal that is known as Uddhava Nala। Okay, so these are the terms that you need to remember। अगर ये species का नाम नहीं भी याद रख पा रहे हो तो चलेगा, लेकिन बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखना मैंडेटरी है। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी paid tribute to the Shri Harichand Thakur on his Jayanti। Okay, so ये बात करते हैं श्री हरिचंद ठाकुर हैं कौन? So he is one of the pioneers who worked against the biggest social evil existing within us, within our territory of India, untouchability, the most disgusting form of practice, a tradition that has been followed since the ancient civilization times, since the ancient history ages, and unfortunately I must say it here, it is still continues। ओके सो ऐसे में हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ओके वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ नेम्स, वी हैव गॉट डॉक्टर B.R. Ambedkar, we have got Mohandas Karamchand Gandhi ji, okay, we have got Swami Vivekananda in the very place of philosophies, okay, those who have worked tirelessly day and night trying to eliminate the remnants of the ancient era's traditions, okay, ill traditions. We have got the name of Lord William Bentinck,
we have got the name of Raja Ram Mohan Roy, the father of modern India, those who have worked once again tirelessly day and night to eliminate all of these social practices. Okay, so these are the names which we read in history, but this is something, there is another name, that is Harichand Thakur, okay, who worked among the untouchable people, okay, of the Bengal presidency. So he came from a family of Vaishnavite Hindus and he founded a section known as Vaishnavite Hinduism called Matua. Okay, so guys, एक term है आपके सामने, who is the founder of the Vaishnavite Hinduism section known as Matua? So it is none other than Shri Harichanda Thakur. Okay, now this was adopted by the members of Namasudra community as well, who were then also known by the pejorative name of Chandalas and considered to be untouchable. ओके, सो अगर हम बात करें नाम शूद्र कम्युनिटी, जिनको उस जमाने में एक नाम और दिया जाता था, चंडाल। ओके, तो अब देखो ये बहुत ही एक नेगेटिव टर्म है, ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, अब इतिहास हमारा कुछ ऐसा ही रहा है। अगर एक लोकेशन में हमारा इतिहास बहुत ही सुनहरा रहा है, गोल्डन रहा है, तो उसी समय में, ठीक है, हमने देखा है कि हमारा ही इतिहास कितना दर्दनाक रहा है हमारे ही अपने लोगों के लिए। ओके, तो चंडाल कम्युनिटी एक हुआ करती थी जिनको हम नाम देते थे नाम सुद्रा, तो इन्होंने भी मथुआ कम्युनिटी को जो है ज्वाइन किया। ओके, द रीजन वाज जस्ट वन, to get rid of the atrocities that they do face because of the evil practice known as untouchability. We talk about Article 17 of the Indian Constitution that says clearly, that is, untouchability shall be abolished in its every bloody form. Civil Rights Act 1955 was enacted. United Nations Declarations on Human Rights 1948 was taken into the consideration while forming up the fundamental rights of the Part 3 of the Indian Constitution. SCs, STs, Atrocities Act was made on the very same lines of 1989, the Act of 1989, right? So all of these things we do have here. And we know that we have learned a lot from the history. Unfortunately, yes, the concept of untouchability, sad but true, has not yet been eliminated totally from the territory of India. But that doesn't mean that it is not going to be eliminated as well. Yes, we are working against it. We are working on it to eliminate it. Okay, and we hope we are going to achieve this quite soon. Okay, so the philosophy of this section was opposed to caste oppression and inspired the community towards education and social upliftment. This was the basic philosophy. And according to a historian, देखिए बहुत ही wonderful बात यहाँ पर बताई गई है, historian है शेखर बंदोपाध्याय. Okay, Thakur experienced आत्मदर्शन और self-revelation, through which he realized that he was the incarnation of God himself, born in this world to bring the salvation to the downtrodden. ओके, बताया गया कि ठाकुर हरिचंद्र जो थे, इनको रियलाइज हुआ कि ये खुद भगवान का अवतार हैं। ओके, लेकिन ठीक है, अपने आप को भगवान का अवतार बोल देना सही गलत जो भी है, दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, दैट्स नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट इन्होंने काम बहुत बेहतरीन किया। ओके, सो मोदी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनकी जयंती पर, हरिचंद्र ठाकुर साहब की ओके जयंती पर जो अपना ट्रिब्यूट दिया है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फाइनल हेडलाइन फॉर द डे एंड द स्ट्राइकिंग हेडलाइन फॉर द डे, प्लास्टिक रॉक्स। क्या होते हैं ये, कैसे होते हैं ये, मतलब कैसे टर्म दे सकते हैं हम प्लास्टिक रॉक्स को। Okay, so the plastic rocks, they have been found on the remote Brazilian island of Trindade. ब्राजील के अंदर एक आइलैंड है। ओके, अब रिमोट आइलैंड मतलब कि बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड आइलैंड है। ओके, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि इनफैक्ट कह लो है ही नहीं। ओके, सो ब्राजील का अपना एक आइलैंड, ओके, नाम क्या है, त्रिंदाड। तो सबसे पहली चीज तो आपको जो काम करना है वो है इसको मार्क करना है अपने एटलस में, अपने मैप में।
ठीक, तो हो सकता है प्लास्टिक रॉक से क्वेश्चन ना आए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रिनिडाड। हो सकता है आप कंफ्यूजन में आ जाओ और लिख दो इसको ट्रिनिडाड एंड टोबैको का, ओके, एक पॉइंट हो सकता है, वहां का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बिकॉज नाम सिमिलर है, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, ओके, लेकिन नहीं, ये ट्रिनिडाड है, ट्रिनिडाडी एक्चुअली ब्राजीलियन लैंग्वेज में, ओके। यहां पर मिला है क्या, प्लास्टिक रॉक। प्लास्टिक से बना रॉक दिस इज आई कंसीडर द ग्रेटेस्ट जोक ऑफ द मिलेनियम, द ग्रेटेस्ट जोक ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। प्लास्टिक से बना रॉक, जस्ट लाइक आई विल कॉल काली मिर्च से बनाई हुई मीठी खीर, और आई मे जस्ट कॉल, है ना, कि भाई मैंने नमक वाली सेवई बनाई, हाउ कम दैट बी पॉसिबल, राइट। बट हम इंसान हैं, हमने हमेशा से दुनिया को यही दिखाया है कि जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करने में ही हमारा सेटिस्फैक्शन है, और अब हमने एक नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिया है, प्लास्टिक रॉक बना दिया है। आइए बात करते हैं प्लास्टिक रॉक होते क्या है, ठीक है। तो ये हमारे ही बनाए हुए, कैसे, हम जो प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का कचरा जो अपने खूबसूरत समुंदर में फेंक देते हैं, ये because of the waves, because of the tides, thanks to the gravitational pull of the moon, okay, that is the bulge of the moon, जहां से हमें हमारे oceans में tides और waves देखने को मिलते हैं, okay, so ये जो टाइड्स हैं, जो वेव्स हैं, ये इसमें समुंदर के अंदर मौजूद जो प्लास्टिक है, इनको उठाकर किनारे तक ले जाते हैं। सारे प्लास्टिक को नहीं, कुछ प्लास्टिक को, कुछ प्लास्टिक समुद्र में अंदर डूब जाता है, कुछ ऊपर तैर रहा है, और ये तैरते तैरते किनारे पर, यानी कि किसी ना किसी शोर, यानी कि किसी ना किसी आइलैंड पर आ टिकता है। अब ऐसे में टिका टिका बहुत जमाने से, बहुत सालों से बनते बनते कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया कि भाई प्लास्टिक से स्टोन ही बन गया, ओके। सो दे आर मेड ऑफ sedimentary granules and other debris held together by plastic, and these rocks are called plastic glomerates because they are made of mixture of sedimentary granules and other debris held together by plastic। सिंपल शब्दों में प्लास्टिक ही हार्ड होते होते इतना हार्ड हो गया, उसमें इतने सेडिमेंट्स ऐड ऑन हो गए कि वो रॉक बन गया, पत्थर जैसा, ठीक। सो दे आर कंसीडर्ड अ पोटेंशियल मार्कर ऑफ द एंथ्रोपोसीन, an informal epoch of the Quaternary proposed by some social scientists, environmentalists and geologists. Now, plastic agglomerate could potentially form a marker horizon of human pollution on the geological record. अरे हमने ओजोन लेयर में छेद कर दिया पगले, ये तो प्लास्टिक से बना हुआ रॉक है। हमने उस शीट, उस बेडशीट, नॉट बेडशीट, उस ब्लैंकेट में होल कर दिया जो हमें दिखाई भी नहीं देती। खैर उसको हमने वापस से भर भी दिया, ठीक है। तो प्लास्टिक से रॉक्स बन जाना कौन सी बड़ी बात है ना। सो ह्यूमंस वी मेड nothing, okay, we say nothing is impossible, we make impossible things to come into the realm, to come into the radar of possibility, right? So they may survive as future fossils. अगर ये दुनिया खत्म हुई और उसके बाद दूसरी दुनिया बनी इसी धरती पे, तो जो अगली आने वाली जो दुनिया होगी, जो जनरेशन होगी, वो ये प्लास्टिक रॉक पढ़ेगी और कहेगी भाई साहब ये कैसे बना होगा, क्या किया होगा उन जमानों के इंसानों ने, कितना आगे रहे होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, है ना, यही सोचेंगे बेचारे। Okay, so plastic agglomerate may also conceivably be formed in plastic polluted regions affected by lava flows or forest fires.
okay, and they have been found on the surface as well as beneath the sand. तो guys जो point है आपको दिमाग में रखना है कि ये प्लास्टिक ग्लोमरेट्स या प्लास्टिक रॉक्स कहाँ मिले हैं, तो बीचेस जो हैं, आइलैंड के जो बीचेस हैं, जो शोर्स हैं, द सी शोर्स, ये वहां पर बालू के ऊपर और बालू के नीचे, सैंड के ऊपर और सैंड के नीचे दोनों जगह मिले. Okay guys, so these are the points you need to remember with regard to the terms here, okay, of the plastic. Okay guys, so that's it with the session as of now. See you all soon in the economics PT 2023 topics class and the PT the perspective Takkar class as well. And before ending up the session guys, please do remember the 400 dreams, okay, exam date 30th of April 2023, 30 अप्रैल 2023 को आपका ये ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है. अब इसकी खासियत क्या है, इफ यू स्कोर द टॉप 10 रैंक you will get the GS Foundation course free, okay, remaining will get the concession as per the score. Okay, so guys please scan it, okay, here is the QR code and register for the scholarship test now. Okay, then further the GS Foundation batch, it starts a month later or 26 days later after the test, that is 26th of June 2023. ओके, हमारा जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा 30 अप्रैल को और जो बैचेस हैं वो 26 जून को स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, सो गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट Takkar All India free PT mock tests. Okay, so the two toppers of each test, they will get GS main test series absolutely free. ओके, तो अगर आप हमारा टक्कर ऑल इंडिया फ्री पीटी मॉक टेस्ट लेते हो और उसमें आप अच्छी रैंक लेकर आते हो, मतलब टॉप 2 रैंक अगर आप लेकर आते हो, तो जो जीएस की जो मेंस टेस्ट सीरीज होगी वो आपको दी जाएगी एट 0 कॉस्ट. Okay, that is absolutely free. And apart from that, the test is scheduled on 26th of March 2023. ठीक, so पिछले जो टेस्ट के टॉपर्स हैं आप देख सकते हो, उनका जो है नाम और रेफरेंस यहाँ दिया गया है. ओके, सो हम चाहेंगे कि आपका भी नाम यहाँ पर टॉपर्स की लिस्ट में ऐड ऑन हो और फिर यहाँ से निकल के बहुत जल्दी यहाँ पर भी ऐड ऑन हो जाए. ठीक है, सो वेपन्स आपको दिए गए हैं, बता दिया गया है कि क्या करना है, कैसे करना है अपनी जर्नी को सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट करने के लिए. दैट इज ऑलवेज स्पोकन from your home to the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration into the Queen of Hills Mussoorie, right, Lesser Himalayas में मौजूद खूबसूरत लोकेशन पैराडाइज ऑन अर्थ की धरती पर कहीं अगर जन्नत है ना मेरे भाई तो वो मसूरी में ही है, लबासना में, उसके अलावा सब बेकार. Right, okay everyone, so that's it with the session right now. See you all soon. Bye bye, take care, study well and Jai Hind as always.